Joh Jeeta taught me so much so, Mansoor taught me so much so, Bhatt Sahab taught me so much so. So that was my growing, and I always wanted to, do more than what I was offered and beyond, go beyond the character that they've written. मंसूर से मैं भी डरा हुआ था कि वहाँ पे सेट पे ये था कि 40 रीटेक्स 50 रीटेक्स मंसूर ले रहा है और फिर भी ओके नहीं बोलता है. दूसरा शॉट लिया, फिर ओके किया उसने, फिर तीसरी जगह, फिर मेरे को इम्पेशंस हो गया. समटाइम्स यू फील कि डायरेक्टर को लग रहा है ये सब बकवास कर दिया है यार, ये लोग सब पोपट है, अभी इसको शूट करके खत्म करके घर जाता हूँ. मैं एक राउंड लेता था. हाँ. उसके बाद वो मामिक तैयार, तो मामिक का राउंड, उसके बाद फिर आमिर तैयार. तो मैं बोल रहा था भाई तुम लोग तो ब्रेक ले रहे हो यार, मेरे को तो ब्रेक लेने दो. Hi, this is Deepak Tijori and you're watching me on Bollywood Hungama. एक और ऐसे डायरेक्टर है जिनके हम सभी फैंस हैं एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू एसोसिएटेड विद देम फॉर अ फिल्म जो आई थी 1992 में, खिलाड़ी. अब्बास मस्तान की मैं बात कर रही हूँ. क्या ट्विस्ट पे ट्विस्ट लाते हैं, लेकिन पहली ट्विस्ट एंड ऑफ कोर्स बीइंग द फर्स्ट ऑफिशियल खिलाड़ी फ्रेंचाइज विद अक्षय कुमार. क्या यादें जुड़ी हैं विद दिस फिल्म? बहुत एक्चुअली मैं यादें तो क्या बताऊँ, मैं इनके बारे में एक यूनिक चीज़ बताता हूँ जो अब्बास मस्तान के बारे में, कि जब फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं करता हूँ फिल्म अब्बास भाई मस्तान भाई के साथ में, तो नरेशन का टाइम आया. तो नरेशन में हम लोग होटल के कमरे में बैठे थे, तो मस्तान भाई इधर बैठे, अब्बास भाई इधर बैठे, और नरेशन चालू होता है ना, तो ऑब्वियसली यू आर लिसनिंग वन साइड, सडनली एकदम से ये आवाज़ कट होती है, तो दूसरी जगह से आवाज़ आती है, फिर यहाँ से कंटिन्यू होता है, फिर यहाँ से कंटिन्यू होकर फिर यहाँ से कंटिन्यू होता है. तो मतलब लिटरली यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू द होल फिल्म लाइक अ स्टीरियो साउंड, कि इधर से फिर ये जैसे कट हुआ, ये कट हुआ. तो इस तरीके से इनकी अंडरस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग. इनका एक तीसरा भाई भी है, तो वो तीनों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, हु इज़ द एडिटर बेसिकली, तो हुसैन भाई, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग हाउ दीज थ्री हैव सच यूनिक क्वालिटी ऑफ नोइंग ईच अदर्स माइंड सो वेल. सो लिटरली बोलता हूँ ना कि खिलाड़ी के टाइम पे I was just following what they were saying, what they wanted me to do. I was giving them everything that they desired, and they knew that where what to reshoot, a couple of things which they redid it, and I was wondering कि यार ये क्या करवा रहे हैं, अलग कुछ करवा रहे हैं. So all those kind of things ना, which was very unique about them, that they were actually editing the film while they were shooting, which was the best part. So you don't get such directors who actually know their craft so well that while they are shooting, they know what they're going to keep, what they're going to remove. So अगर मैंने कोई एक टेक दिया है और मैंने बोला कि सर ये टेक बराबर नहीं हुआ, नहीं वहाँ तक मेरे को मिल गया है, आगे करते हैं. So that is what I'm saying is, it saves so much energy for being an actor with them. I also feel that, when I think of this film, basically it's a murder mystery. But having entertainment, there is fun, there's college, there's comedy with Johnny Liver and मेरा छोटा छोटा बच्चा. Oh my God, so cute. My God, Johnny Bhai has been a delight. And उसके बाद भी जहाँ एक मोड़ पर ये फिल्म जो है वो शायद अब चेंज हो गई है और नीचे जा सकती है, because now it can turn like very scary. But to keep up that tempo, my God, amazing. क्या बात है. वही बोल रहा हूँ कि they have always been very brilliant as directors and storytellers तो है ही हैं कमाल के. So I have always cherished working with them. So I think they are one of the best thriller makers in our country, and it was amazing. So film में तो आप और अक्षय and आयशा जुल्का and everyone are great college friends. Yes. कैसा था माहौल shooting with अक्षय कुमार? बहुत अच्छा था. हम लोग actually I used to know Aki since the time he was also an kind of rising and working hard towards doing a lot of dance classes and stuff like that. So he was also one of the good dancers that time. And I had already, just finished Ashiki and stuff like that. So we were known to each other because we used to gym together once upon a time, long ago. So I think it was a very comfortable journey because more of us were known to each other, friends. Aisha I did not know, but of course since I was doing 2 films back to back with Aisha,
So everything was kind of hunky dory because जो जीता भी कर रहे हैं हाँ. और खिलाड़ी भी कर But रहे ये हैं simultaneously shoot की जा रही थी? साइमल्टेनियसली. मतलब मैं पागल हो रहा था उन दिनों में कि लिटरली. और वो मतलब वो जो होता है ना कि बैक टू बैक ये शेड्यूल खत्म हो. और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि फिल्म एक वन शेड्यूल में बनेगी. हाँ. वो कभी 10 दिन मांगेंगे इस महीने में तो दूसरी फिल्म के भी 4-5 दिन उसी महीने में होंगे. फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद. सो ऑलमोस्ट इट टेक्स 9 months to 1 year to finish a film. So you know that whole procedure was constantly there. So you know there was not a time when we could finish the film in 45 days. 45 days in totality हो सकते हैं. Correct. लेकिन कभी 4 दिन इस महीने में तो कभी 2 महीने बाद दूसरे 7 दिन. तो इस तरह से फिल्म बनती थी बिकॉज बाउंड स्क्रिप्ट का और वो सब चीज़ों का ज़माना नहीं था. जी जी. वो सब बाद में भट्ट साहब भी हम लोगों को जब कहानियाँ और वो सब बताते थे तो वो लिखवाते थे. तो बोलते थे अभी ये सीन्स करने हैं, खाली ये सीन्स पढ़ ले. भट्ट साहब आगे अरे आगे बाद में देखेंगे. सो यू नो ही यूज्ड टू डेवलप इट, वर्क ऑन इट, सी द एडिट. And accordingly they used to plan. Like learning it on the job, quite literally. Yeah, literally. Every time, I mean, they just knew the graph of the character, and then you know, obviously the writers used to be constantly, you know, churning out scenes, which was a unique part. I mean, अब तो खैर अजीब लगता है कि वो कैसे maintain करते होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है. अभी हम लोगों को एक साथ स्क्रिप्ट मिलती है तो obviously अच्छा लगता है कि हम लोगों को ग्राफ मालूम है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये करना है अपने को. Is it a genre that you enjoy? Murder Actually, mystery. Yeah, of course, I enjoy watching it. I love watching it. So, at the same time, I feel that I have been very fortunate to not be stuck with a particular genre as an artist. Yes. I have done family dramas, to I have done a thriller, to I have done a sport film, to I have done a murder mystery. So, all these kind of genres which I have kind of been a very major part of, which has been a delightful part as my acting career goes, and which is I think is the reason why you know a lot of audience that identifies with me very comfortably is because ये भी इसने यहाँ भी किया, ये भी किया, तो you know they have always been very easy with me. ये comfortable की आपने बात की ना, I just remembered this one scene from Khiladi only, and it just shows that how dedicated you are to that friend Akshay Kumar, जो पहले एक सफेद गुलाब देता है, फिर एक येलो देता है और फिर लाल गुलाब, and you are going like I am not sure, of course he is not even listening, but देखा सफेद भी दिया, देखा, oh my god, ये dedication, I think Deepak ji, that's why you know that true friend that one can see in your characters come across so well, you know, I feel. Yeah, in fact, once Bhatt Saab said that to me, that the whole reason for you know because I was very close to Pooja and I'm still very close to Pooja. We're still very good friends. Yeah. So friendship पूजा के साथ बहुत गहरी थी और भट्ट साहब को पता था. तो वो हमेशा देखते थे कि राहुल के साथ भी अच्छी दोस्ती है इसकी, पूजा के साथ भी, और लिटरली लाइक यू नो थिक, लाइक यू नो वी वाज थिक. सो that time you know he realized that I am genuinely a good friend, and then once when he cast me in Sadak again as a friend, and then you know he brought me into दिले के मानता नहीं, ऐसे ऐसे भट्ट साहब ये कब तक करवाओगे. तो बोलता है साला तू अच्छा दोस्त, genuinely तू दोस्त अच्छा है, इसलिए तू जब दोस्त बनता है ना फिल्म में तो वो निकल के आता है, वो दिखता है, वो जेन्युइननेस दिखती है. So I think that is the reason why you know I love to cast you as a friend. But at what point did you as Deepak Tijori accept it कि ठीक है यही है, मैं दोस्त बनूंगा और अच्छा दोस्त बनूंगा. उस टाइम पे ना, क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा था ना उस टाइम पे ये मेरे लिए मतलब सब कुछ था. मतलब मैंने 100% देना था और मेरे को ये था कि यार बस यही ठीक है, इतना यहाँ तक. आप बिकॉज जो मेरा पास था ना वो पास में तो मुझे लगा था कि मेरी ट्रेन छूट गई, अभी मुझे वापस वो डेस्क दिख रही है और मुझे लग रहा है मैं कुछ किताब लेके बन जाऊंगा, मैं पढ़ाई लिखाई जो की है उसका. तो वही चीज़ मेरे को डर लग रहा था. तो जब मैं यहाँ तक पहुँचा था ना, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि बॉस आई हैव रीच्ड हियर, आई एम हैप्पी. नाउ व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर ऑन is all destiny. I'm not really, you know, working towards it. And then things started flowing. So for me, I was absolutely content. Of course, desires of becoming and doing a better job and doing a better job, that always as an actor was the reason why actually I somehow from 2000 onwards, you saw me missing and you saw me less until now when I start again with all this, is because हमारे इंडस्ट्री में यहाँ पे सब ब्रैकेट्स बना लेते हैं. तो जैसे मेरे ही कुछ दोस्त और मेरे ही कुछ कलीग्स जो मेरे जूनियर्स हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं. जैसे आई फील दैट अरशद वारसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट एंड द ग्रेटेस्ट टैलेंट दैट वी हैव, एंड ही स्टक बिकॉज ऑफ द इमेज. हमारे यहाँ इमेज को इतना स्ट्रांगली बसा लेते हैं लोग दिमाग में,
तो उससे बाहर निकालने के लिए मौका नहीं देते। उससे एक आदमी निकल पाया था, वो है सैफ। सैफ उसी इमेज में फंसा हुआ था, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये सारी चीजें जो कर रहा था। पर उसको जिस दिन वो आमिर और फरहान की वो जो फिल्म मिली दिल चाहता है, वहां से ही वाज लकी टू टेक दैट लीप। बट आई सफर्ड, Arshad is still suffering, you know, he's kind of making individual films, solo films, but still not working. तो एक ऑडियंस का माइंडसेट वो चेंज करना, एक ऑडियंस के अलावा हमारी अपनी इंडस्ट्री का माइंडसेट चेंज करना कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को ट्रस्ट तो करो यार। तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ की वजह से मुझे लगता था कि इसमें से निकल नहीं पाऊंगा। तो आई हैड टू टेक एन इंटेंशनल ब्रेक। एंड ऑल माई फ्रेंड्स हु यूज्ड टू कॉल मी कि यार दीपक ये रोल कर ले, वो रोल कर ले। इनफैक्ट मेरे को जब गुलाम मिली, जब 3 सीन थे, तो उन लोग प्रिपेयर्ड थे कि दीपक नहीं करने वाला है, बिकॉज मैंने उस टाइम से शुरू कर दिया था। बिकॉज मुकेश जी, मुझे याद है, मुझे बुलाया था मुकेश जी ने ये बोल के कि मेरे को मालूम है तू फिल्में नहीं कर रहा है, तू काम नहीं कर रहा है, तू बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड काम कर रहा है, तू सुन ले। तो मैं बोला ठीक है मुकेश जी, मैं सुनने ही आया हूँ। विक्की को मैं बोल देता हूँ, मेरे को क्या। विक्की को मैंने यही बोला, विक्की जितना है ना उतना ही बताना, हिस्ट्री ज्योग्राफी मत बताना। बिकॉज दैट टाइम एवरीबडी हैड कंसिडर्ड मी कि बॉस ये कोई सपोर्टिंग रोल है, कोई इसका रोल है, कोई छोटा सा विलन है, कोई उसका मामा चाचा भांजा। तो आई वॉज लिटरली मीटिंग डायरेक्टर्स एंड देयर वाज एन इंसिडेंट व्हिच आई कैन टेल यू। वन ऑफ द डायरेक्टर्स who called me and he says, Deepak, I am going to present you. And he is a big director. And I was very happy. I'm getting a call from him. He calls me and he says, he narrates the whole thing to me. You get out from a car and you walk and I shoot you in high speed. And I was getting carried away, okay? So by the time I had been groomed myself and I knew that, okay, this is coming up, this is coming up. So he narrated it to almost 1 hour to narrate all my scenes. Then I sat with him and I asked him, I said, boss, I said, tell me one thing. What if these scenes that you showed, tell me, if they are not part of the film, if this character goes missing from the film, what happens? Why? I said, no, I said, these things happen now. हमारे टाइम पे ना फिल्में रैंडमली शूट होती थी। क्यों? 4 दिन की शूट आज करी, 10 दिन बाद में करी, तो फिल्म की लेंथ जब टेबल पे बैठे तो समझो कि उस टाइम पे 3 घंटे की फिल्में बनती थी, लेकिन कई डायरेक्टर्स जब फिल्म बनाने बैठते थे 4 घंटे की बन जाती थी, 4.5 घंटे की बनती थी। तो मेरे दिमाग में ये सब था। तो मैंने उसको जब ये सवाल पूछा तो उसको उस टाइम पे समझ में आया कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो मैंने सीधे सीधे इसको इस तरीके से पूछा क्योंकि उसने इस तरीके से नरेट किया मेरे को। तो मैंने बोला देख भाई, मेरे को ना वो फिल्म करनी है, छोटे बड़े से लेना देना नहीं है, मेरे को वो फिल्म करनी है कि अगर ये किरदार उस फिल्म में से हट गया तो फिल्म टूटेगी। जो चीज़ मैंने उनको प्रूव करी जब मैंने गुलाम के लिए हाँ बोला कि अगर गुलाम में चार्ली नहीं होता तो फिल्म नहीं बन सकती थी। Oh my God. So when I got up after listening to Vikram Bhatt and he narrated 3 scenes to me and Mukesh Bhatt was very prepared कि ये पागल आदमी है, ये मना करके निकल जाएगा। तो मैंने मुकेश जी को बोला सीधा उठ के, मैंने बोला मुकेश जी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, पैसे की बात तो आपसे करके फ़ायदा नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ, जो भी देना है मेरी झोली में जो डालना है वो डाल देना। और मैं निकल गया था। सो एंड दैट फिल्म ऑल्सो वॉज अगेन समबडी लाइक यू नो आमिर रिकमेंडेड, आमिर टोल्ड कि बॉस दीपक को लाओ चार्ली के लिए। सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टर्स इज आमिर बिकॉज ही when he's sitting and casting na, he's not doing favors, let me tell you that. He does not believe in favors with regards to work. Very clear man. So when he was casting Lagan, he never called me. But when they were doing Joh Jeeta, he was the one who brought me back. Because I had auditioned for it and I was rejected for it. And I was not in the mood कि boss मैं वापस वो film के लिए जाऊँ because they had started shooting. But when the film got stuck for some or the other reason, it was Aamir shooting for Dil Ke Manta Nahi in Ooty with Bhatt Saab. He tells Bhatt Saab कि Bhatt Saab please दीपक को बोलना मंसूर को जाके मिल ले। Oh. So I said when Bhatt Saab came for 2 days he came to Bombay. So he said घर पे आ। बोला हाँ भट्ट साहब बोलिए। बोलते तेरे को मंसूर को मिलना है। So I had that thing कि भट्ट साहब अभी मैं क्यों मिलूँ, मेरे को तो रिजेक्ट किया था, इडियट है, कुछ समझ नहीं आता वो, तू जा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ जो करना है करना है। You don't understand. Aamir himself has told me, please tell Deepak. He must be knowing now what he's talking. So obviously I know Aamir since college days. So I know that he is a family kid. He is a kid who's born and brought up in industry. He knows. So
आई सेड हाँ ठीक है, मिल लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ. एंड दैट इज हाउ आई वाज ब्रॉट इन. द फिल्म वाज स्टक एंड द फिल्म वाज नॉट गोइंग टू बी मेड. So I had no idea about it. Boss. But Milind Soman had also shot He a shot lot. 75%. 75%. Bro, he had finished 75% and there was no question. So did you but go through his scenes to just Yeah, understand? of course. No, not his scenes. What happened was when I was called, then when I went to meet Mansoor sir. When I met Mansoor, I had the privilege of meeting the legend that is his father, the Nasir Saab. जी. So I was in awe of that man because we've grown up watching his films, you know. So I was in awe of Nasir साहब. So I said, नासिर साहब आपसे मिल लिया, बहुत कमाल की बात हो गई. तो बोलते नहीं बेटा आपको ये फिल्म करनी है. मतलब सर आपने बोल भी दिया, बस करनी है. लेकिन मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है. मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ देखना चाहूँगा. अच्छा. कि जो वजह से आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो मुझे वजह जाननी है और मुझे डायरेक्टर से जाननी है. सर मेरी इतनी ख्वाहिश है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस बात से मेरे को कन्विक्शन हो जाए कि इसकी वजह ये है. क्या वजह थी? तो फिर वही था कि उन्होंने फिर वो मुझे रशिस दिखाए. अच्छा. और फिर रशिस दिखाने के बाद मुझे बोला कि with regards to whatever the complications they used to have, you know, on the sets, and probably there was some friction which was going on. Again, recently Milind gave a statement कि उसको breakfast नहीं मिल रहा था and all that. So I don't know what really happened, you know. But when I was convinced of the look of the film and the feel of the film, and I knew that it was completely new cinema for Bollywood, you know. And I knew that हिंदी सिनेमा में इस तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है. और इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने बोला यार ये नासिर साहब का भी ऑर्डर है और भट्ट साहब का भी ऑर्डर है, प्लस यू नो आमिर इज ऑल्सो यू नो टोल्ड इनडायरेक्टली दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. आई जस्ट वेंट ब्लाइंडफुली बिकॉज कहानियाँ तो इतनी सुनी थी मैंने कि मंसूर से मैं भी डरा हुआ था कि वहाँ पे सेट पे ये था कि 40 रीटेक्स 50 रीटेक्स मंसूर ले रहा है और फिर भी ओके नहीं बोलता है. और एक्टर्स जो वहाँ से निकल के आए थे तो उन लोगों से कहानियाँ सुनी थी. तो यू वोंट बिलीव माई फियर. फर्स्ट डे ऑफ द शूटिंग व्हेन आई वेंट फॉर जोह जीता ना, हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं और मेरे साथ में पूरी राजपूत टीम चेंज हो गई. और मंसूर ने कॉन्शियसली सारे थिएटर के एक्टर्स और अच्छे जो यू नो एक्टर्स होते हैं ना, एक्टर ब्रीड, उनको लेके आ गए. तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज हम लोग सब एक्टर ब्रीड होते हैं तो अच्छा होता है. कभी कोई मॉडल ब्रीड आ जाता है ना तो उसको समझाना और उसके साथ मैच करना मुश्किल होता है. सो ही कॉन्शियसली मेड दैट एफर्ट कि बस दीपक के साथ में राजपूत टीम जो है वो सारे एक्टर्स, सो सूरज, बॉबी, आई नो रवि, ऑल ऑफ अस वर वेरी मच इन सिंक. नाउ आई सेड कि चलो ठीक है. अभी हम लोग सीन शुरू कर रहे थे, पहला शॉट था. आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि बॉस ये 25-50 टेक जाएंगे, पता नहीं कितना जाएगा. तो पहला शॉट किया. जैसे ही मैंने शॉट ख़त्म किया उसके बाद मंसूर ने बोला ओके, और कैमरा फिर शिफ्ट करने के लिए बोला. तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे ही चुप बैठ के, मैं इन लोगों के साथ भी बात नहीं किया. मैंने बोला हाँ चलो ओके हो गया, तो ठीक है. दूसरा शॉट लिया, फिर ओके किया उसने, फिर तीसरी जगह, फिर मेरे को इम्पेशंस हो गया. यू नो समटाइम्स यू फील कि डायरेक्टर को लग रहा है ये सब बकवास कर दिया है यार, ये लोग सब पोपट है, अभी इसको शूट करके ख़त्म करके घर जाता हूँ. It's amazing how our mind works. I mean, first thing we do is doubt ourselves. Yeah, because जो कहानी सुनी होती है ना, तो ऑब्वियसली जब मालूम है कि यार एक डायरेक्टर जो है वो हमेशा ऐसा उसकी रिपोर्ट ही आई है, जी. तो क्या डर लगता है ना कि यार क्या होगा. तो वो चीज़ जब नहीं हुई ना, तो फाइनली 2 शॉट के बाद मैं मंसूर के पास सीधा चला गया. बोला मंसूर, यू हैप्पी विद व्हाटएवर यू डन, यू वेरी हैप्पी? या he is absolutely transparent and a very genuine man. So बोलते हैं या, तो मैं बोला नहीं, मैं बोला आई जस्ट थॉट you want another option to it? No I don't want, but if you want we'll take it. इतना हम्बल आदमी और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, मैं तो पानी हो गया. मैं बोला यार ये तो कमाल आदमी है. एंड ट्रस्ट मी, ऑल थ्रू द फिल्म there was no such incident where you know I felt कि oh my god, मैं मतलब कितनी स्मूथली चला गया. एक कमाल का इंसिडेंट बताता हूँ. आपको याद होगा जोह जीता में मेरी और मामिक की फाइट होती है जी. पता है वो मेरे को, मैं उसको ऊपर से नीचे फेंक देता हूँ. वो फाइट ऑब्वियसली उसने पहले शूट की होगी दूसरे एक्टर के साथ में, क्या किया मुझे पता नहीं है. बट जब हम लोग शूट कर रहे थे तो एक रात पहले ना उसने मेरे को और आमिर को रूम में बुलाया, उसके रूम में. फिर बोला Deepak, Aamir, I've called you because tomorrow we are shooting Ratan's fight with Shekhkar. So I want you all to tell me, what do you think should happen in the fight? So Aamir said, what do you mean?
So he said, no, I mean, who beats whom and how much of beating, what should be the sequence? Aamir was very simple and straight. He was, he's the villain. He's got to be trashed. That's about it. So he looks at me. He says, what do you think? And they are brothers, of course. You know, they are related. So they can be very friendly and very easy with each other. So I was a little, concerned कि बस मैं कैसे उसको क्या बोलूँ. तो मेरे को पूछा. तो मैंने बोला कि सी मंसूर, I think my opinion is that this is a pre-climax. In the climax, I have a bigger hero to fight. Yeah. But if you make your villain so weak in the pre-climax, and if Ratan beats me in and out, everybody knows I'm going to lose the race any which way in the climax. Yeah. But if you don't bring the villain to the point where I am actually a threat to Aamir, so बोला ठीक है, okay, go both of you, thank you. He doesn't say anything, huh? So he said, we're looking at each other. So लेकिन क्या? तो actually, you know what, Aamir, I know what to do. You all go now. But I think what Deepak said makes sense to me. So we'll see what happens tomorrow. And then the next day, that moment when he falls and I go like this, Correct. कि वो जो moment था ना, वो था नहीं, वो पिक्चर में भी नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं था, वो मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने किया. तो जब मैंने किया ना, तो एक्शन मास्टर था ना, उसने बोला कट कट कट. तो बोलता है, मैं बोला क्या हो गया? अरे दीपक तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? तू तो विलन है यार, तू तो उसको. अरे मैं बोला विलन है तो क्या हो गया? And I was arguing with the action master. Yeah. So Mansoor was listening to it. So Mansoor said, no, what Deepak is saying is right. Correct. Do it. Let's take one more shot. Do it again. And he kept that. So I think, all this has been a growing experience for me, that everything is not hard and fast, but if you are a genuine person with regards to your own character, then things will be, absolutely easy for you to walk through. And that is how Joh Jeeta taught me so much so, Mansoor taught me so much so, Bhatt Saab taught me so much so. So that was my growing, and I always wanted to, do more than what I was offered and beyond, go beyond the character that they've written. And let me just add the fact that, you also kept it so real. What you just said so beautifully explained, that विलन है तो क्या हुआ, एक सेकंड के लिए तो इंसानियत जगती है. वो स्कूल का बच्चा है ना, आखिरकार तो वो बच्चा ही है. तो इतना बड़ा उससे हादसा हो गया है, तो मेरा जस्टिफिकेशन वही था कि यार ठीक है, माना वो एरोगेंट है, माना वो रईस है, माना सब कुछ है, लेकिन कोई भी बंदा इस तरह से किसी का मर्डर कर दे, किसी को मार दे, तो ऑब्वियसली वो हिल जाएगा कि यार ये मैंने नहीं बोला था कि तेरे साथ ये हो जाए. सो आई थिंक दैट वाज माय इंस्टिंक्ट, एंड आई थिंक दीज इंस्टिंक्ट्स ना has always been in the past. There are some beautiful moments which I have such memories that there were times when things have not been scripted the way they are, but they have kind of shaped up, because as an actor you feel it. So today when I am a director now, trust me, what I do, Urmin, is I always give that right of talking to my actor and giving and taking his opinions. Because I know that if I could have been a person who actually have gone on the set and made those amendments to the character with the small tidbits that I added, which actually changed the life of the character, I said I give that right, because now I'm a director. I might be doing the perspective. My perspective will be an overview. It might not be a detail as much as the person who's living it. So I always lived it, and I felt that this was not right, this was right, and that kind of an. Having done myself, I always give that right to my actors. All my actors have that liberty. Not only actors, I actually give the right to all my assistants also to tell me what you feel, because you never know what really comes out of it. And I think that is what really is filmmaking about, because that is how I learned it. Deepak ji, but how did you prep for the role of Shekhkar? Because in all your earlier films, there's this friend, and जैसे मैंने पहले भी कहा, that this मरते दम तक दोस्त. लेकिन we see this absolute mean character that we do not like, but he's the stud boy and every girl definitely wants to be with him. कैसे आपने इस किरदार के लिए So trust me when I tell you, actually, see, Shekhkar Malhotra has never been me, but obviously there was. Have you met a Shekhkar in your life? Never. In your life, like someone. No, that's what I'm saying. So in Bombay we don't have Shekhkar Malhotras. In North there are. Out of 20, there are 15 Shekhkar Malhotras. So, that is why my character was, when we screened it in Delhi and we went for that premiere in Delhi,
Aamir's reaction, my reaction was that जब मैं जीत रहा हूँ ना तो ताली मार रहे हैं सब, और जब आमिर जीत नहीं आ रहा तो सब लोग वू वू कर रहे हैं, तो हम अलग लोग बोल रहे रिलेशन निकल रहा है। हाय ला, हम लोग बोल रहे हैं क्या है यार ये फिल्म का, that was the reaction. But in Bombay, obviously, the whole uniqueness about this whole film is that the people who are the elite and the rich, they loved Shekhkar Malhotra, and people who are Bombayites, they loved Sanjay Lal. So they were like, my God, I mean, it was a unique part of it, of that particular film. So I think that is how we generally look at it, that, I never had to prepare, as in prepare, but one very tough thing for me for being Shekhkar Malhotra was the cycle race, yaar, boss. Because you all will not imagine, you all have seen the film as the film के boss, पहले एक रेस आई और एंड में एक रेस आई, पर आप लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये रेस दोनों साथ में शूट होती है यार। तो मैं एक राउंड लेता था, उसके बाद वो मामिक तैयार, तो मामिक का राउंड, उसके बाद फिर आमिर तैयार, तो मैं बोल रहा था भाई तुम लोग तो ब्रेक ले रहे हो यार, मेरे को तो ब्रेक लेने दो। So it was like doubling up, because in the same location, correct, we are shooting the first race and we are shooting the second race. So I had a doubling of everything, that whole race, first part and second part. So I was dying literally, because I was never a cyclist. So obviously it was very nice that there were some Parsi boys who were nationalists, national level cyclists who Mansoor had kind of hired for the film, and they were wonderful to teach me. Because the first day I remember when I actually was asked by Mansoor, Aamir and everybody, कि boss एक काम कर, अभी रेस शूट करनी है तो तू एक साइकिल ले ले और यहाँ से वहाँ तक राइड कर यार। I made a joke of myself, everybody was laughing and they were depressed कि यार इसका क्या करेंगे अपन अभी यार, because क्या है कि साइकिलिस्ट के लिए ना there is a way that they sit, the posture, because apparently the posture is just like, not just a posture for the sake of the way handles have been made like that, the way things have been made like that is for a purpose, because when the body is like that, it cuts the wind. But the moment you go up and you're riding, you can never race and you cannot cut the wind. So they actually look down, they have a thing over here, they hold it like that, the legs have to be like that. So it was all given to me by these cyclists कि boss ऐसे नहीं बैठने का, ऐसे नहीं चलाने का, and this much pressure has to be on the seat, this much pressure has to be on the pedals, and this is how you go to, when you go up the hill, when you go downhill. All those things were like magical for me. Ki, boss, it's a craft. It's not just that you're riding a cycle, boss. So it was crazy, I'm telling you. And then I remember, because I was never a cyclist, so my legs were not so good. My legs were weak. So I was asked by those guys कि boss अभी तू जिम में जाएगा ना, तू कुछ नहीं करेगा, तू सिर्फ साइकिल चलाएगा. So I remember, I was in holiday and just constantly I used to go to the gym and I used to sit on the cycle. So all these guys who were working around me, one of them was Shakti Kapoor. He was like our legend actor. So he was our boss. So obviously we used to look up to him because he was Shakti Kapoor. Yeah. So when I used to be sitting on the cycle, he says, अरे बंद कर, कहाँ जाएगा तू, खंडाला पहुंच गया, अभी चल नीचे, आप कुछ और कर ले। नहीं, जब तक वो गहरी घाट से ना उतरे तब तक नहीं चलेगा. Because I had to make my thigh muscles very strong to actually go into the Ooty section, and they were really those dangerous sections. Trust me, we were shooting in those locations. One small mistake and we would have gone down. They were crazy sequences, but we loved it. और ऊपर क्या प्रॉब्लम क्या था कि ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है, which I did not know about it. तो हम लोग थोड़े से पेडल्स मारेंगे ना और वो ऑक्सीजन खत्म तो obviously we used to be like, oh my god, what is happening? So on that basis, I think it was like a new experience for me altogether. Oh, but Joh Jeeta Wohi Sikander is by far one of the finest films, for most of us a cult classic. जैसे ही आप बात कर रहे हैं, we can see rushes, we can think about every scene, the funniest, the most romantic, the greatest songs. आपके favorite scenes कौन से हैं? Actually, it's difficult for me to kind of distinguish between the scenes, but I think I've loved all the parts of the films that I have done. And except for the last, the fag end in the
late 90s when I started, doing some small bits of roles for friends. Yeah. Which is when I stopped after 2000. I said, "Bas, abhi bahut ho gaya." So I think most of my work I have most passionately been involved with. That's the reason I've never really compromised. कि I don't want to do this. I was very clear and I want to do this. In that time also I was very clear कि बस मेरे को ये फिल्म करनी है, ये फिल्म नहीं करनी है. और आज जब मैं एक्टरों को मिलता हूँ और जब मैं स्क्रिप्ट लेके जाता हूँ तो उनको लगता है कि यार हम लोग दीपक को बोल रहे नहीं करना है, तो मेरे को वो प्रॉब्लम आता ही नहीं है. Because every actor has that particular thing that he wants to do this, he doesn't want to do it. Yeah. So when an actor tells me, "Boss, I don't want to do this today. I want to do this maybe a later part of my life." So I think it's a part of the graph that each one is just now working on towards. Yeah. We were working on then, they are working on it now. So I think it's a matter of times that we talk about, but everything remains the same. The way the films, of course, only thing is that cinema नहीं है, अब reels नहीं है. नेगेटिव नहीं है, अब वो डिजिटल है. थिंग्स हैव बिकम मोर ऑर्गेनाइज, मोर थिंग्स बिकम मोर कि भैया 50 दिन है, 45 दिन है, उसमें फिल्म खत्म हो जाती है, लंबी लंबी चलती नहीं रहती है. सो अनलेस यू मेकिंग अ बाहुबली और मेकिंग आरआरआर, दैट काइंड ऑफ सेटअप इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर. करेक्ट. बट टुडेज फिल्म्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन खत्म करो एक साथ, वन शॉट. Amazing. But since we are on the topic, I have to do कि सबसे आगे सबसे कौन? राजपूत. Hi, this is Deepak Tijori and you're watching me on Bollywood Hungama.